Hello and welcome. You're watching Business Today Television. I'm Sakshi Batra and this is your favorite show, Daily Calls, that answers all your stock-specific questions on the show. Over the next 45 minutes, top 2 market experts will be joining in to resolve all the questions that you have about your stocks in your investment portfolio. Now, in case you're here for the first time, the WhatsApp number is flashing on your screens. That's where you send me all the questions that you have about maybe the stocks that are on your watch list afresh, those that you are feeling stuck in. Ask everything that you need to know, and you need a well-informed, a stock expert's answer, on those as well. Now, in case you are also logging in and joining our show via YouTube, go on to Business Today Live and go to the Daily Calls Live section, use the comment section there and send me your questions. I'll be happy to address that for all of you as well. Let me first quickly look at how the markets are trading at halftime. At this point in time, you do see that the markets, especially the IT index, that's doing very well in trade. It's picking up pace. You can see a 1.7% of a move on the higher side. Even the banks are actually doing well. Private banks, financial services, they are doing very well. Mid and small caps are into the green. Autos are also higher. But what has slipped lower? Well, metals has slipped. You can see FMCG, consumer durables, pharma, realty. These are the pockets that have actually slipped in trade, at least for now. When we look at the key movers when it comes to the Nifty 50 per se, right now the Nifty is hovering around 24,997, 999 odd mark. So 25,000 and thereabouts on the flat line, on about 100 points higher is what we do see around that 25,000 mark. But what's doing very well is the healthcare related stocks. We marked out the news flow for all of you to see the changes in the CGHS that's leading to a lot of buoyancy in the healthcare related names. So Max Healthcare, Shriram Finance, Bajaj Finance, Apollo Hospitals, these are the names that are actually doing well in trade as of now. But let's welcome our guest on board. We are joined by Nilesh Jain shortly, our Head and Vice President of Technicals and Derivatives Research. He's joining in from Centrum Broking. Warm welcome to you, Nilesh. Good to have you with us. Once again, we are knocking the doors at 25,000 odd levels on the Nifty, 105 points higher in trade. How are you looking at the markets from here on? The Navratri and the Dussehra festivities are behind, but everybody is setting their eyes out on now Dhanteras and Diwali over the next 15 days. But also, more importantly, earnings that will be the flavor of the season, or at least over the next 15 days or so, starting this Thursday. That will be definitely in focus. How are you looking at the markets amidst all of this action? Very good afternoon. Absolutely. So I think what a great start for the October series, I would say. For the third consecutive sessions, we have seen a good, I would say, strong momentum in the market where the Bank Nifty is leading from the front. But that's quite something that is giving more confidence. We have seen an outperformance, relative outperformance compared to the Nifty index in the Bank Nifty. So overall, structure-wise, if you look at the levels on the upside, the FI long-short ratio is trading at historical lowest level. The markets are slightly in the oversold territory. The rollover data that we have seen, a lot of short builder position have been rollover in the October series. So given this kind of data point, the market is definitely poised for a short covering rally. And Nifty just now looks like it is crossing about 25,000. The immediate hurdles have already been crossed. I would say 25,000 is the only level that we need to watch out for, specifically from a today's closing perspective. And on the upside, the target that we are expecting for the Nifty could be somewhere around 25,400 to 25,600 as far as October series is concerned. 24,700 will now be the next important support, and 25,200 and 25,500. These are the two levels we are expecting in the October series in the Nifty. Compared to Bank Nifty, now Bank Nifty is looking more positive. It is making an attempt to cross 56,000 mark. 57,500 is the target that we are expecting in the Bank Nifty spot level, and 55,000 will be the next important support. So both Nifty and Bank Nifty are looking strong on the chart, and in the October series, we are expecting Bank Nifty to outperform the Nifty index. Okay, fair point. I hope this has definitely set an outlook for the markets for all our viewers. I hope you've got some sense there. But let's welcome all our viewers who are joining in with all the questions. Now on our YouTube, we have Aarti, Anuj joining in, Sandeep also joining in, Maurya, Ankur. Welcome to everybody. We have Raghu, Govind, Sheetal also joining in early. Thanks for all your questions, early questions that are coming in. Welcome to all of you. We'll start off by taking some questions now. The first question for you, Nilesh, is on Engineers India. This is from Aarti Jain. Says, I have 1,000 shares at 201. What could be the target for the next 1 month? So a short-term outlook there on Engineers India. Bought at 201. What would you say?
Looks like more sort of a consolidation in Engineers India, but good part is that it has a very good support at 188 to 190 zone. Now, looking at the overall setup, there could be possibility of a short-term rebound from the lower levels, and we may see a move towards 205 to 210. But I'm not expecting any major V-shaped kind of recovery in this particular stock. A gradual up move is something that can be seen from a short-term perspective. A break above 205 will provide a follow-up move towards 210 to 215. But for the long position, I would suggest to keep a stick stop loss at 192. That should be the stop loss for the long position. And for the time being, one can stay put in the long position in this particular stock. Okay, got that. Let's look at the next few questions also coming in then. We have this question from Anuj Singh. He wants to know, he says, good afternoon to everybody. Good afternoon to you as well, Anuj. He wants to know about Nykaa. He has bought this share at 205. About 500 shares is what he has. 1 year target is what he seeks from you from the current levels as well. Nilesh, we've been seeing how Nykaa in the past has actually been an extremely volatile stock, one that has really seen a lot of negative news flow, and that has impacted the sentiments quite largely. But over the last couple of quarters, we have been seeing sentiments improve both in the earnings as well as how situation is turning positive. Today also the stock is up by 5%. Your sense? Absolutely, Sakshi. So if you just pull up last 3 year chart, you can clearly see the stock has broken the highs of last 3 year long consolidation. And on the weekly time frame chart, if you see, it has formed a big rounding bottom kind of a pattern. We have seen a gradual up move recently. So overall, the structure is turning positive, and we are expecting a move towards 300 levels. That although that will take some more time, but the structure is looking positive at current level. One can go long, keeping a stop loss below 230 on the upside. Immediate target could be somewhere around 275. That can be seen in next 1.5 month time frame. But positionally from 3 year plus kind of time frame, I think 300 plus kind of levels one can expect in Nykaa. So structure wise looks strong on the chart. Okay, let's look at some of the other key questions that are coming in. We have this question coming in from our WhatsApp also. A lot of people are sending. Monish from Kanpur in UP writes in and says, can you please guide me for the stock I'm holding? BPCL is what I want to know at. I want to know, I bought this at 339 levels and I can actually hold it till March of 2026. So what should be my trajectory going forward? Well, large part of this year, the oil and gas stocks have also been in flavor. Bought at 339, which is the current level, I think, for BPCL. Any suggestion till the end of the fiscal year? So largely for H2 of FY26, he wants to know how will the stock pan out? Sakshi, if you see the structure of BPCL before that, you need to see the structure of Brent crude as well. So crude oil has been in a declining trend. It has broke important support of $66. Currently, it is somewhere around $64. So the trend on the Brent crude looks weak. That will be a supportive for the OMC space, aviation, and also somewhat paint stocks will be in beneficiary list. But as far as BPCL is concerned, from a positional perspective, the structure appears to be on a positive side. Although the immediate trend looks more sort of sideways, there could be possibility of some bit of decline towards 335, 330. But if at all you see the levels of 330, that could be a good entry point in terms of fresh entry. And a positional target in this particular counter comes somewhere around 360 to 370. So it's a buy on decline, keeping a stop loss below 320, and positional target is 360 plus. Okay, got that. Let me also look at some of the other key thought processes there that we are getting from our viewers. Okay, the next question that we have is from Maurya. He says, I want an outlook on SBI Cards for the October series. So for this series itself, how would you look at it, Nilesh? SBI Cards, any suggestion of reversal of sorts or a momentum that you see on this stock? First of all, very good shock. If you see this particular space, NBFC, housing finance, in fact, overall financial space, we are expecting an outperformance in the October series. We have seen a very good momentum in the NBFC space, specifically Bajaj Twin, Chola Finance, LTF, which is trading at all-time high. I think SBI card is poised for next leg of up move. For the October series, it appears on a positive side. 865 is a very good support for this particular counter, and 930 to 940 kind of levels can be seen for the October series. So
Fresh entry can be initiated somewhere around 900 levels, and if somebody is already holding the long position, can ride this momentum up to 930 to 950. Okay, let's actually look at some of the other key thoughts there. We have this question now coming in from Ankur Modi. He says, hi Sakshi, hope you're doing fine. I'm doing very well, Ankur. Thanks a lot for asking, and I hope the same for you. He wants to know largely on the consumption space. He says both cinema as well as consumption theme have been looking positive. I want to know about two stocks here, PVR from the multiplex space, and also want to know about Trent from the retail space over the next 6 months. Any suggestion or thought on that front? How would you look at it, Nilesh? Well, first of all, trend, this particular counter has gone into extremely oversold territory. We have seen a decline in last couple of months in this particular stock. Also, after this decline, it has reached to its multi-month support zone. So, from a risk and reward perspective, looks attractive because if you see the support which is placed somewhere around 4600, that should be the stop loss. And on the upside, we can expect a gradual up move in next 3-4 months. Quite possible that stock may touch the levels of 5,000 plus 5,400, 5,500 kind of levels can be seen. Now coming to PVR, I know it is moving more sort of a sideways. Last 6-8 months we have seen a gradual up move with more sort of a consolidation now. I would rather wait for a breakout above 1180 that will provide more comfort on the upside. But as of now, it's an avoid. And if somebody has already bought it, this particular counter, then keep a stop loss below 1070 and stay put. From a 3 to 4 months perspective, we can expect a gradual up move to continue. Okay. Let me just take another one. This one is from Vinita Gupta. She says, good afternoon Sakshi, I want to make a fresh entry in AFL and in Hind Copper. Could you please suggest what could be the right levels to accumulate these two stocks? For sure, we'll help you out, Vinita, with Nilesh ji definitely guiding you on the same. AFL is one stock where she wants to make a fresh entry, and also in Hind Copper. Now remember, copper prices have already been trading at multi-year high, and therefore these all copper related stocks have been buoyant as well. What would your thought be here, Nilesh ji? Absolutely, Sakshi, you rightly pointed out copper prices, where in MCX, if you see copper, which has touched almost 1000 mark, that's the all-time high. So structure-wise, we are expecting further upside to continue in the copper space for 1040, 1050 kind of levels on the upside. So given that kind of structure in copper, Hindustan Copper is also looking strong. Although we have seen a very good momentum in the previous month of September series, and this month, this series has also started on a positive side. But these are not the levels to enter fresh longs. Better to buy on decline. If at all you see the levels of 320, 310, that could be a good entry point. Another strategy could be to buy in a multiple tranches. So at in regular interval, you can initiate long position. Positional target for this particular counter comes somewhere around 400 plus. So that's the position target. Stop loss should be placed below 300, and good entry level could be somewhere around 320, 330. Now coming to FL India, see, we have already seen a decent correction from the highs. After hitting highs near about 2175, 2180, the stock has corrected below 2000 levels now. So these are the good levels to enter in terms of making a fresh entry. The major trend looks strong. Given the structure that we have seen on month basis, we can expect this outperformance to continue in FL, and the stop loss for fresh entry should be placed at 1840. Okay. Let's take the next one then. We have a lot of questions that are coming in also on our WhatsApp. So let's take some questions from there as well from our viewers who are joining in new. We have this question from Havinder. He says, I want to know, I've recently started to invest and I've started to watch this show also recently. Welcome Havinder, good to see you on the show as a fresh face who's joining in. The questions that you've brought to our focus is, one is prime focus that you have a position in. You bought this stock at 195. The other one that you have investment in is Paisalo, which you said you bought it at 40 levels just yesterday, and you're only looking for a near term target. So which we believe that you are looking for a trading view onto these stocks. Prime focus, we do remember over the last couple of sessions and last few weeks, we've been seeing some momentum there. So maybe looking at that, he entered into this stock, but at 195. It's already come off that peak and it's now at 174. Paisalo he bought yesterday at 40. Today again the stock is lower. Your sense on both these stocks?
Well, Sakshi, the common mistake that people make is buying at the peaks. We have Yes. already seen a very strong momentum in P focus all the way from 142, it rallied to 200 level. In between, we saw multiple circuits as well. So usually you see after such sharp run up, the stock usually witness some bit of retracement. That is what currently we are witnessing. Since it has bought it at extremely high level without keeping a stop loss, now you have to keep a very strict stop loss at 168. If it breaks 168, then on the lower side, it might test 150 level as well. So at present level, if at all you see any pullback towards 185, 190, probably at that level, you can review again. Or if at all you want to stay put in this long position, keep a stop loss at 168. Now coming to Paisalo, similar kind of spurt we have seen in this particular counter as well. It's not looking that promising from a position perspective compared to P focus. Paisalo is looking slightly on a weaker side. So exit on pullback should be the strategy. If you get the levels of 39, 40 or 41, that could be a good exit point. And if at all you want to stay put, then keep a stick stop loss at 36. Coming to P focus, as mentioned, it is looking comparatively better, but you might have to wait and you might have to give some more time in this particular counter. Quite possible that it may rebound to towards the levels of 195 to 200. Okay, got that. Let's actually look at taking some other questions also. Okay, we have this question now coming in from one of our other viewers, Hyderabad say. We have Sri Hari Krishna joining in, and he says, hi Sakshi, I'm holding Samvardhana Motherson stock in my portfolio from last 1 year. I want to know, should I continue to hold on or should I exit? And if you advise me to exit, any other stock that you would request me to switch to? Now tell me, Nilesh ji, Samvardhana Motherson, one of the top favorite stocks of the auto ancillary basket for investors for a long haul, but it has been in a consolidating space for some time now. Your thought? Well, Motherson, no doubt, it has been consolidation in a consolidation mode since a long time. It has hit a high near about 145, 140 levels, and soon after that, we have seen a sharp decline. So, in last 1 year, we have seen a lot of correction. But at present level, I think the risk and reward is favoring the long position. Since recently, we have seen stock has surpassed all key short-term and long-term moving averages. So, strength is coming back, but you have to keep a strict stop loss at 102. 102 is a very strong support. That was a breakout zone that we saw recently in the previous month. So keeping that as a stop loss, you can expect stock to move towards 115 to 120 in a very short term time frame. Maybe quite possible that within October series you might see those levels. But if at all you want to switch on pullbacks, you can shift to the better stocks like Hero Motocorp. You have TVS Motors. So within two-wheeler space, you can focus on all these stocks. We are bullish on auto space from October series point of view. Okay, let's look at some other questions that are coming in again from our viewers. Okay, we have Satyan writing in. He says, please ask if it is the right time and the right price to add Max Health to my portfolio for the next 12 to 18 months. The stock has been in momentum. Remember, like I marked out in the morning show as well, that's the CGHS changes that are being talked about by the government. The first time, some revamp that's taking place after 2014. This is being seen positively by all the healthcare stocks. That's why you see Max, Fortis, and all the other stocks, Global Health, all of these stocks in focus today. Narayana Hrudalaya, the healthcare index is up by about 0.7%, and you can see it's at the day's high, and therefore the momentum. Nilesh, how would you look at Max Health at the current levels? Do you think it will still hold value? Well, Max Wealth has been in a corrective phase. In last couple of weeks, we have seen a gradual decline in this particular counter. But after this sort of decline, the stock has found a very good support at 1050. So 1050 should be the stop loss first of all for the long position. If somebody is looking to make an investment from next 3 to 4 months perspective, then I think it's a good approach. Keep a stop loss at 1050 on the upside, 1180, 1220. These are the levels one can expect, and gradual up move is something that one can expect going forward.
Okay, fair point. Let's take another one. This one is from one of our viewers. This is Chandra Singh Dodia. He's again our regular viewer, Nilesh ji. He says, good afternoon, Nilesh sir. Please can you suggest to me on Unimech Aerospace? IPO में ये शेयर मुझे अलॉट हुआ था. इसमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में क्या सजेशन आपका रहेगा? So since he's talking about the IPO, I don't think there'll be too much of a data for you to track here. Any suggestion, even though still that you would have? Well, it got listed in the year December 2024. So last 8-9 months data is available with me. And if I look at the overall trend for this particular counter, is looking more sort of a negative. कोई भी पुल बैक इन बिटवीन जो भी हमने देखा है वहां पे फिर से अगेन सेलिंग प्रेशर यहाँ पे हावी होता हुआ नजर आ रहा है तो स्ट्रक्चर इतना प्रॉमिसिंग नहीं है if at all you get any pullback and any decent kind of up move in this particular stock, better to exit because you have better options available. So shift to the better options. In this particular counter, I would advise to exit on pullback. But if at all you want to stay put, then keep a stick stop loss at 900. 900 का stop loss लगाएं अगर आपको hold करना है तो. Otherwise, pullback पर exit करने की सलाह. Okay, let's take the next one. This one is coming in from one of our viewers. Okay, Suresh from Pune. He says, Aditya Birla Lifestyle jumped on a big block deal today. How are you looking at the outlook going forward from here? Should I look at this as a profit booking situation or should I continue to hold on? How would you advise on this? Yes, the stock really went up sharply by about 8-9% odd in trade today and then it slipped thereafter. This is Aditya Birla Lifestyle that we are talking about. 7.9% higher, it's still holding at. Nilesh, how would you look at AB Lifestyle at this point? Well, after looking at today's spurt of over 8%, I think it's not advisable, first of all, to take any trade at current level. Yeah. But looking at the recent positive up move, there could be possibility of a follow-up move towards 152 to 155. But in terms of making a fresh entry, the risk and reward is not looking attractive. So it's an avoid taking fresh entry. If somebody is already holding the long position, can keep a trailing stop loss at 142.5 and stay put for the existing long position, but avoid fresh. Okay. Taking the next one then. This is from Ramesh Gangwani from Delhi. He says, I have 300 shares of Biocon in my portfolio. What should I do? Should I hold or exit? I bought at 350. How would you advise on this one? See, it is trading near about your buy price at 348 right now. So ideally, breakout or the momentum will come back if it takes out 360 levels on the upside. So I would suggest you better, buy on breakouts above 360 and at present level, if you want to stay put, then keep a trailing stop loss at 340. So 340 should be your stick stop loss. Structure is looking more sort of a sideways. So we are not expecting any short-term momentum in this particular counter, but keep a stop loss and stay put. Okay, let's take another question. This one is from Umesh from Delhi. He says, good afternoon Sakshi, good afternoon Nilesh ji. I have bought Blue Dart in my portfolio priced at 5,861. I'm only looking at the festive season for another 3 months. Any suggestion that you would have on this one? Well, a large part of the initial move that we, expected on the consumer durables must have already come and got digested. Any sense if one continues to hold on for the next 3 months on Blue Dart, will it make any sense? Because, the price has come down from Umesh's own purchase price of 5,861. What would you say? Well, Sakshi, if you pull up last 4-year chart or 5-year chart, you can clearly see that stock is still trading at those levels. In between, we did saw some bit of up move towards 9,000 levels, but it has corrected from those levels. It has formed a major top somewhere around 9,000. Double top can be seen. So structure-wise, looking weak. Sell on rise kind of structure. If it breaks below 5,500, then it may slide further towards 5,000 as well. So better avoid taking any contra bet. Do not initiate a fresh entry in this particular counter. That's the advice. Unless and until it breaks 6,000 on the upside, then probably there could be possibility of a follow move towards 6,500. But at present, it's an avoid. And if at all you have already bought it, then keep a stop loss at 5,500. Okay, got that. Let me also look at some of the other key stocks queries that we are getting from our viewers. Mohit from Ludhiana says, I've got JSW Cement in my portfolio at 138.
although my time horizon is absolutely long term, 5 years plus, what would you suggest? I have 300 shares of JSW Cement in my portfolio. Should he continue to hold on? Next 5 years is the time frame that he has? Well, Sakshi, it's a very recent listing got listed in the month of August. So I have Yeah. only 1.5 month data, but whatever data is available, JSW Cement, if you look at the cement space as a whole, yes, the aspect from a longer term perspective looks positive. You have better options available within cement pack, Ambuja Cement, ACC, even Ultratech Cement. So these are the giant player where you can expect a decent return going forward. As far as JSW Cement is concerned, if you have already bought into this particular counter, then from a support perspective, it has a very strong support at 135. So that should be the stop loss. And 5 year very long time frame, longer term time frame of 5 year, given that kind of horizon. I think you can stay put. It's a very good group company. Okay, let's take another one. This one is from Santosh. He says, I'm holding WAAREE Energies, 118 shares at 3,685. Should I hold or sell at the current levels? What would your advice be on WAAREE Energies, Nilesh? Right. So Y energy is constantly forming a height of an Haberton formation. Structure looks positive. 3180, 3200. That's a very strong support. And if you give some more time, let's say 3 to 6 month kind of time frame, if you are expecting the stock to move towards 3800 to 4000. So that's the kind of potential the stock is holding. Stay put is the advice. Keep a stop loss at 3200. Structure looks strong. Okay, fair point. Let's take another question. This one is from one of our other viewers who's joining in on our YouTube. Then we have a lot of new, viewers who are joining in. Okay, Tekpal Bhatia says, sir, can you please share a long-term view on Syngene? Right, Syngene is in fact one of the underperformer, and the counter has witnessed a lot of selling pressure at the high level. So structure-wise, is not looking that promising, but it has a very strong support, multi-month support that 600 level. So if you have already bought into this particular stock, then keep a stop loss at 600, and any pullback towards 670, 680, that can be a good opportunity to exit. That's from a short to medium term perspective. But if somebody is looking from a very longer term perspective, then also keep a stop loss and see if at all you see any positive development beyond 700. If it moves, then the scenario will change. As of now, looks sideways to negative. All right. Okay, Nilesh. Towards the end, any key stock ideas that you'd like to suggest from your own behalf? You know, the Nifty's climbed up above 25,000 once again. What is keeping you busy in terms of stock ideas? Right, Sakshi. So we are focusing on banking and financial space. We did mention about NBFC space as a whole that is looking positive, showing good momentum. So you have to be with the momentum. So within NBFC space, Shriram Finance is something that is looking positive for a short-term momentum to continue towards 700 plus. So watch out for that particular counter, keeping a stop loss below 650. Buy and decline should be the strategy. Now coming to private sector bank, Kotak Mahindra bank is something that is looking attractive at current level for 2200 plus kind of target. So keeping a stop loss below 2100, this particular bank can also be bought on declines. Now today we have also recommended Siemens. Siemens is another stock that is showing a strong rebound. So that can be bought for upside target of 3350, 3400 on the upside. One can keep a stop loss below 3160. It's a buy. Okay, fair point. Let's take another one then. We have this question coming in from Kavita from Jaipur. And let's also welcome, I think Pradeep Haldar is also joining in on the program with us. Hi Pradeep, warm welcome. Good afternoon to you. Good to have you with us. We are just going to be taking some questions along with you as well. Last question, Nilesh, that I'm going to be taking from you is from Kavita from Jaipur, and then we'll come to Pradeep for his own view on the markets. Netweb Technologies. He wants to know that it has rallied pretty sharply. What would you see? Will the momentum continue, or will one get trapped at these levels? How would you advise? Sakshi, as we mentioned during the show as well, that people are getting trapped at the peak. So that one should avoid. So these are not the level where one should take a fresh entry. Although the momentum looks strong, the counter is trading in uncharted territory. It is forming height of an Haberton formation as well. Good volume participation can be seen. There is no doubt that we may see further momentum towards 4400 to 4500 as well. But these are not the level where one should look for fresh entry. The risk and reward is not looking attractive. So buy in a staggered manner if somebody wants to buy this particular stock, multiple tranches,
one can buy the stock keeping a stop loss below 3700. Looks good from a position perspective. All right. Okay, Nilesh, thank you so much then for being with us in the show and, of course, for helping out all our viewers with solving their questions. Always a pleasure to host you with us on Daily Calls. Good to have Thanks, you. ma'am. Let's go back to Pradeep now and welcome him and with a view on the markets first. Pradeep, from your end, 25,000 again on the screen with us. What's your thought? Will we again make an attempt to move up higher, or will this be used for profit booking? That has been the case for the last couple of weeks. How would you advise? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर अगेन हैविंग मी ऑन योर शो। नमस्ते आपको एंड सारे व्यूअर्स को। देखिए निफ्टी अभी 25,000 के ऊपर सस्टेन हो रहा है एंड कहीं ना कहीं मैं लास्ट 2-3 हफ्ते से पॉजिटिव हूँ। मिड टर्म के लिए 27,500 28,000 मैं थोड़ा एग्रेसिव बुलिश अभी मैं हूँ मार्केट में, लेकिन शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि 25,000 के ऊपर टिकना बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट टर्म में व्यू एकदम न्यूट्रल है क्योंकि 25,000 के ऊपर जब जब निफ्टी आ रहा है कहीं ना कहीं एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि एक बार 24,650 से लेके 25,000 ही जो जोन है इसके ऊपर एक क्लोजिंग आना चाहिए। अगर क्लोजिंग आ जाता है तो नेक्स्ट जो व्यू होगा 27,500 28,000 ऑन द वे। एंड निफ्टी बैंक अभी 56,050 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि निफ्टी बैंक का भी एक 56,000 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है यहाँ पे वॉच करना थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा कंपेयर टू थोड़ा हम पीएसयू बैंक्स पे देखेंगे। पीएसयू बैंक्स पे मेरा थोड़ा व्यू अभी स्ट्रॉन्ग है। सो कहीं ना कहीं निफ्टी बैंक निफ्टी 2 एक दिन 3 दिन 1 हफ्ते के लिए न्यूट्रल व्यू है क्योंकि 25,000 के ऊपर और 56,000 के ऊपर सस्टेन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। और बाकी मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए मैं बहुत ही एग्रेसिव वाला मैं पॉजिटिव हूँ मार्केट में जी। ओके, गॉट दैट। चलिए, उम्मीद करते हैं हमारे सभी दर्शकों को एक आउटलुक मिल गया होगा कि किस तरीके से प्रदीप जी भी देख रहे हैं बाजार को, और आप इसे डेफिनेटली ध्यान में रख सकते हैं अपनी स्ट्रैटेजीज को बनाते हुए। अब सवालों के ऊपर ही बढ़ते हैं आगे। बहुत सारे सवाल प्रदीप जी आपके लिए आ रहे हैं। तो सबसे पहला है साक्षी का मुंबई से। ये लिखते हैं कि मेरे पास 2 क्वेरीज हैं। पहला तो मैंने 400 शेयर्स खरीदे हैं अनंत राज के 722 पर, और दूसरा मेरे पास पूनावाला फिनकॉर्प के शेयर्स हैं 567 के भाव पर। दोनों में ही अब इनके प्राइस से नीचे स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं, और अब आपसे एक शॉर्ट टर्म टारगेट 1 महीने तक के लिए जानना चाहते हैं अनंत राज और पूनावाला फिनकॉर्प में। कैसी आप यहाँ पर एडवाइस देंगे? देखिए अनंत राज में मैं पॉजिटिव हूँ और मुझे लगता है कि अनंत राज का टारगेट ऑलमोस्ट 780 एंड 800 के आसपास होना चाहिए, लेकिन शॉर्ट टर्म में ऑलरेडी ना स्टॉक बहुत चल चुका है। सो आई एक्सपेक्ट सम प्रॉफिट बुकिंग, सम हेल्दी करेक्शन। सो एटलीस्ट 670 से लेके 650 तक मुझे लगता है कि एक बार डीप लगा सकता है। तो जिनके पास थोड़ा मिड टर्म या लॉन्ग टर्म का व्यू है मुझे लगता है कि उनको होल्ड करना चाहिए। बाकी फ्रेश पोजीशन यहाँ पे नहीं होना चाहिए अभी करेंट जोन से। पूना वाला फिनकॉर्प अभी भी रैली आया नहीं, ब्रेकआउट होने के बाद अभी 520 के ऊपर सस्टेन कर रहे हैं। मुझे लगता है कि पूना वाला फिनकॉर्प आपको होल्ड करना चाहिए। करेंट जोन से भी मुझे लगता है कि यहाँ से ऑलमोस्ट 20 से 25% आप मूवमेंट रैली में देख पा रहा हूँ। सो कहीं ना कहीं होल्ड करने का सलाह है और फ्रेश बाय भी करने का सलाह रहेगा। और एक फ्रेश कॉल अभी मैं देना चाहूँगा, ब्रेकआउट आया अगर आपका परमिशन हो तो। ज़रूर बताइए। देखिए डेंटा वाटर एक स्टॉक है, बहुत टाइम बाद एक ब्रेकआउट आया है और मुझे लगता है कि डेंटा वाटर अभी जो 460 के ऊपर सस्टेन हो रहा है, 462 461 के आसपास अभी चल रहा है प्राइस। मुझे लगता है कि इसका एक स्टॉप लॉस होना चाहिए ऑलमोस्ट 444 में एक स्टॉप लॉस होना चाहिए और इसका टारगेट होगा 475 एंड सेकंड टारगेट ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि अबव 500 जाने के लिए रेडी हो रहा है। 2 से 3 हफ्ते का व्यू रहेगा। 495 इसका लास्ट टारगेट है, उससे पहले 475 एक फर्स्ट टारगेट होगा, सेकंड टारगेट 495 एक 444 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। करेंट जोन से बाय करने का सलाह रहेगा। 2 से 3 हफ्ते का व्यू। Okay, if all of our viewers are also watching out for breakout stocks, Denta Water has been recommended by Pradeep ji here. 461.9 पर अभी चल रहा है, ऑलमोस्ट 4% ऊपर है। आपको टारगेट्स और स्टॉप लॉसेस दोनों बताए गए हैं। एक मोमेंटम में आ रहा है ये स्टॉक और आप इसमें डेफिनेटली फोकस कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और अब नेक्स्ट हमारे जो स्टॉक क्वेरी है उसके तरफ बढ़ते हैं। सौरभ गोयल हैं, लिखते हैं गुड आफ्टरनून साक्षी एंड गुड आफ्टरनून प्रदीप जी। वीनस पाइप्स है मेरे पास 1629 का, यहाँ पर आपकी क्या राय बनेगी? वीनस पाइप्स को क्या होल्ड करके रखना चाहिए? देखिए वीकली ट्रेंड अभी भी नेगेटिव है, ऑलमोस्ट 1304 के आसपास का प्राइस चल रहा है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक सपोर्ट जो है ऑलमोस्ट 1170 से लेके 1200 के आसपास, मतलब यहाँ से बहुत लंबा दूर है। इसमें कंसोलिडेशन हो रहा है बहुत टाइम के बाद, अभी भी ये फ्रेश ब्रेकआउट या तो बेस नहीं बना रहा है। सो कहीं ना कहीं एक बार फ्रेश तो बाइंग यहाँ पे नहीं बनता है। जिनके पास ऑलरेडी होल्डिंग है मैं बोलूंगा एक स्टॉप लॉस होगा ऑलमोस्ट 1220 1225 के आसपास, आप मेंटेन कीजिए और बने रहने का सलाह होगा।
Okay, let's take another one. This one is from one of our viewers, कमलेश नरखेड़े, और ये लिखते हैं प्रदीप जी, शिल्चर टेक्नोलॉजीज के कुछ शेयर हैं इनके पास 3100 पर, इसमें और एवरेज कहाँ पर कर सकते हैं, ये आपसे जानना चाह रहे हैं, कहाँ पर एवरेजिंग बनेगी? देखिए, जब भी आप क्वेश्चन करो तो बाइंग कितने प्राइस में है वो अगर आप बता देते तो बात करना थोड़ा 3100। हाँ 3100। सो कहीं ना कहीं देखिए एक बेस बिल्डिंग हो रहा था, बेस बिल्डिंग होने के बाद यहाँ पे जो फॉर्मेशंस दिखाई दे रहा है मुझे लगता है कि उनको होल्ड करना चाहिए। शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा बहुत वॉलेटाइल रह सकता है, लेकिन जिस तरीके से सपोर्ट लिया है सो कहीं ना कहीं और ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है। सो व्यू अगर आपके पास 1-2 महीना मिनिमम है, करेंट जोन से एक बार 5 to 7% का आप मूवमेंट पॉसिबल होगा तो होल्ड पे रखने का सलाह है, लेकिन फ्रेश बाई किसी को इस करेंट जोन पे नहीं करना है। ओके, गॉट दैट। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल की तरफ देखते हैं। सुरिंदर कौर घुमन है, कैनरा बैंक पर आपसे जानना चाहते हैं शॉर्ट टर्म के लिए क्या इसमें और अपसाइड आपको दिखती है? कैनरा बैंक देखिए ऑलमोस्ट कैनरा बैंक हम देखेंगे 126-127 के आसपास चल रहा है। निफ्टी पीएसयू बैंक अगर स्पेशली बात करेंगे, चाहे वो कैनरा बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सारे बैंक्स पे आप देखेंगे फ्रॉम द लास्ट 2 वीक कहीं ना कहीं बेस बन रहा है और ब्रेकआउट देने के लिए रेडी हो रहा है। सो कैनरा बैंक का एक रेसिस्टेंस था 125 से लेके 127 के आसपास। मुझे लगता है कि ये रेसिस्टेंस अगर क्रॉस होता है इस बार बहुत जोर से ऊपर आने के लिए रेडी हो रहा है। कहीं ना कहीं 170-180 में टारगेट देख रहा हूँ 2 से 3 महीने के लिए, एटलीस्ट 1 क्वार्टर के लिए आपको होल्ड करके जाना है। तो डेफिनेटली करंट फ्रेश बाई भी यहाँ पे अलाउड है एंड बने रहिए कैनरा बैंक के साथ। Okay, got that. Let me also look at the next few questions that we are getting on our YouTube. शिभम पनिग्रही हैं और लोटस डेवलपर्स के ऊपर आपसे प्रदीप जी पूछना चाह रहे हैं। 202 में प्रदीप जी कहते हैं आपने यहाँ पर बाय के लिए सलाह दी थी, अब आपका यहाँ पर क्या व्यू बनता है लोटस डेवलपर्स पर? देखिए मुझे लगता है कि इसका 180 अभी के लिए एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस होना चाहिए। 180 के आसपास आप एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। कभी भी अगर 180 ब्रेक होता है तो फिर आप तब मुझे लगता है कि आपको निकल जाना चाहिए। 180 फाइनल आपको वेट करना चाहिए। और एक कॉल आ रहा है, पहले मैं नाम बता देता हूँ। कंपनी का नाम रहेगा अथर एनर्जी, ATHER एनर्जी। अथर एनर्जी अभी 619 620 के आसपास चल रहा है। डे हाई पे ऑलमोस्ट आ चुका है। इनफैक्ट लास्ट वीक का जो प्रीवियस हाई था उसके ऊपर कंटिन्यूअसली सस्टेन कर रहा है। प्राइमरी ट्रेंड पॉजिटिव, सेकेंडरी ट्रेंड पॉजिटिव, RSI जितनी भी हम टेक्निकल पैरामीटर्स देखते हैं चार्ट में ऑल पॉजिटिव है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये 645 650 जाने के लिए रेडी हो रहा है। सो करंट जोन से बाय करने का सलाह रहेगा। एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन करके जाइए ऑलमोस्ट 592 के अराउंड। 592 विल बी योर स्टॉप लॉस एंड 650 एंड अबव जाने के लिए रेडी हो रहा है। Okay, let's take the next question then. We have more and more people who are joining in currently to ask Pradeep ji their questions. खुशी सिंह हैं, लिखते हैं शेयर इंडिया मेरे पास है, 100 शेयर्स हैं 360 के लेवल्स पर, काफ़ी लॉस हो रहा है इनको और अब ये जानना चाहते हैं कि कैसे इसमें से निकला जाए या फिर क्या रणनीति अपनाएं जिससे कि लॉसेस कवर हो पाएं। प्रदीप जी, शेयर इंडिया के स्टॉक है इनके पास, 139 पर अभी चल रहा है, खरीदा इन्होंने है 360 पर, बहुत ही ऊंचे लेवल पर खरीदा हुआ है। देखिए बहुत ओवर प्राइस में उन्होंने बाय किया है। सबसे बड़ी बात, इन्होंने कोई स्टॉप लॉस नहीं लगाया। जब भी आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो सो एटलीस्ट मेंटेन ये स्टॉप लॉस, एक सिग्निफिकेंट आपका रिस्क टेकिंग एबिलिटी जो है एटलीस्ट वहाँ पे आप एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। अभी भी चार्ट में कुछ भी बॉटम नहीं बनाया, लगातार नीचे आ रहा है। इसका प्राइमरी ट्रेंड, सेकेंडरी ट्रेंड सब कुछ नेगेटिव है, वीकली, मंथली, इनफैक्ट डेली ट्रेंड भी खराब है। मैं बोलूंगा यहाँ पे तो अभी भी कोई मोमेंटम नहीं आ रहा है। इनफैक्ट 160 के ऊपर यहाँ पे कुछ मोमेंटम बन सकता है, लेकिन वो बहुत दूर है एंड आई डोंट थिंक ये इमीडिएट लेवल पे 160 के ऊपर जाने वाला है। सो अगर आप वो दिल पे पत्थर रख के एग्जिट करना चाहते हो तो आप कीजिए, अदरवाइज मैं तो देख पा रहा हूँ एक बार 115 एंड 110 के आसपास जाने के लिए रेडी हो रहा है। Okay, let's take the next question that we have now. We have this question coming in from a lot of our WhatsApp viewers as well. So let's quickly take some questions from them too. Okay, we have this question coming in from, okay, we'll take this question now. From one of our viewers who we've not taken from before. You know, so a lot of people are sending their questions again and again, different stocks, but let me take it from a new viewer. Okay, this is Amit from Kolkata. He says, sir, is Reliance Industries share showing strength and is it a safe bet for long investment? How would you advise on Reliance Industries right now? Anything that on the charts that looks positive to you?
डेफिनेटली इट इज पॉसिबल बिकॉज ऑलरेडी रिलायंस इंडस्ट्री करेंटली ट्रेडिंग हो रहा है 1364 के आसपास, एक अच्छा खासा वैल्यूएशंस में है। अभी अगर 1450 के ऊपर भी, 1400 के ऊपर भी रहता तो मैं कहीं ना कहीं एक बार एक हेल्दी करेक्शंस के लिए वेट करता है। लेकिन जिस तरीके से निफ्टी एक 25,000 के ऊपर ट्राई कर रहा है सस्टेन होने का, और कहीं ना कहीं रिलायंस इंडस्ट्री का एक अच्छा खासा सपोर्ट है 1340 1350 के आसपास, मुझे लगता है कि डेफिनेटली अगर आपका व्यू है मिनिमम 12 से 15 मंथ तो आपको बाई करना चाहिए, आपको डिप के लिए वेट नहीं करना चाहिए। एंड एक बार आप वेट करके जाइए, 1600 के ऊपर बहुत जल्दी आपको आता हुआ दिखाई दे सकता है। करेंट जोन से बाई करने का सलाह रहेगा रिलायंस इंडस्ट्री को। ठीक है, अगला सवाल ले लेते हैं। हमारे पास ये सवाल आया है, दीपा का दिल्ली से लिखते हैं, सर इन्फोसिस के ऊपर आपको क्या व्यू लगता है? कैन आई ऐड इट टू माय पोर्टफोलियो एट द करंट लेवल्स? आईटी के नतीजे शुरुआत हो जाएगी प्रदीप जी थर्सडे से, तो इन्फोसिस उससे पहले फोकस में रहने वाला है। खरीदारी क्या करनी चाहिए अर्निंग सीजन से पहले? मुझे लगता है कि डेफिनेटली अभी एक ओवर सेलिंग जोन पे ऑलरेडी ओवरऑल आईटी पैक को देखेंगे ऑलरेडी है 46-45,000 के आसपास का एक टॉप बना के नीचे आ गया था। इनफैक्ट फोर्थ टाइम बॉटम फॉर्मेशन किया है निफ्टी आईटी इंडेक्स ने इटसेल्फ ऑलमोस्ट 31,500 से लेके 32,000 के अराउंड निफ्टी आईटी इंडेक्स का एक बेस है, और अभी चल रहा है ऑलमोस्ट 34,435 के आसपास। सो कहीं ना कहीं देखा जाए कि हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, बार बार वही होता है आईटी के साथ, जिस तरीके से हमने देखा H1 वीजा को लेके एंड जियो पॉलिटिकल अलग अलग टेंशन से, तो कहीं ना कहीं आईटी सेक्टर अभी उतना चला नहीं है। और इन्फोसिस वन ऑफ द मोस्ट प्रॉमिसिंग स्टॉक रहा है लास्ट पास्ट 15 टू 20 इयर्स में, अच्छा वैल्यूएशन में है, 1458 1460 के आसपास वैल्यूएशन से अभी प्राइस चल रहा है। मुझे लगता है कि इसका टारगेट होना चाहिए 1800 के ऊपर। शॉर्ट टर्म अगर मैं 3 से 4 महीने का भी बात करूं, सो एक स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना चाहिए उनको 1385 1390 के आसपास का एक अच्छा खासा सपोर्ट है, आप मेंटेन कीजिए एंड करेंट जोन से भी बाय करके जाइए, जिनके पास होल्डिंग है आप मेंटेन कीजिए। ठीक है, लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन। हमारे पास ये क्वेश्चन आया है अश्विन का बेंगलुरु से, लिखते हैं, हाय साक्षी, गुड आफ्टरनून। एचजी इंफ्रा और एफकॉन्स में से कौन सा शेयर मुझे कंसिडर करना चाहिए 1 ईयर टाइम फ्रेम के लिए? आई वांट टू इन्वेस्ट 2 लाख रुपीज, सो शुड आई चूज बिटवीन दीज टू, एचजी इंफ्रा और एफकॉन्स? एचडी इंफ्रा को लेके मैं पहले बता देता हूँ, देखिए अभी भी कोई चार्ट में बेस नहीं बन रहा है, तो आप ऐसे स्टॉक पे निवेश कीजिए जहां पे ट्रेंड बढ़िया हो, बिकॉज ट्रेंड इज योर फ्रेंड। अगर ट्रेंड बढ़िया नहीं है तो वहां पे इन्वेस्ट करके आप फंसे रहने का चांसेस बहुत होता है, कंसोलिडेशन होता है चार्ट में। तो 940 अभी चल रहा है, अभी भी सपोर्ट के आसपास नहीं है, करेंट जोन से भी 100 पॉइंट नीचे जाने का क्षमता रखता है, और मुझे लगता है कि एक बार उनको अवॉइड करना चाहिए। और जो एफकॉन इंफ्रा में भी अभी 446 के अराउंड अभी प्राइस चल रहा है, मुझे लगता है कि यहाँ पे तो शॉर्ट टाइम में एक बेस बना है ऑलमोस्ट 420 425 के अराउंड, लेकिन चार्ट ज्यादा अवेलेबल इसमें नहीं है, न्यू लिस्टेड कंपनी है। सो कहीं ना कहीं दोनों स्टॉक ही करेंट जोन से अवॉइड करना है, आपको थोड़ा वॉच करना है। और एचडी इंफ्रा को लेके मैं थोड़ा पॉजिटिव था फंडामेंटल वाइज, लेकिन टेक्निकली अभी अच्छा साउंड नहीं हो रहा है, तो दोनों स्टॉक को अवॉइड करने का सलाह रहेगा। Okay, got that. Let me also take another question. This one is also from one of our viewers on our WhatsApp again that we have. Ramakrishnan from Bengaluru says, I want to invest 1 lakh rupees in Shakti Pump. Will it be a good time to enter at the current levels? What is your view, Pradeep ji, Shakti Pump par? देखिए फंडामेंटली अच्छा कंपनी है, लेकिन टेक्निकली देखा जाए तो अभी भी जो है कोई भी बेस नहीं बन रहा है। अभी मार्केट में मोमेंटम नहीं करना चाहिए, अभी बेस बन रहा है और टेक्निकली बाउंस बैक हो सकता है, पॉसिबिलिटीज, ऐसा स्टॉक आपको ढूंढना है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि फंडामेंटली तो बढ़िया कंपनी है, लेकिन अभी आपको वेट करके जाना चाहिए। 770 से लेके 790 एक जोन है, वहां पे आता है, देन आपको एक बार रिव्यू करके फिर यहाँ पे निवेश करना चाहिए, लेकिन अभी भी वेट एंड वॉच वाला सिचुएशन है। ठीक है, नवीन है एलगी इक्विपमेंट पर पूछना चाह रहे हैं, 548 पर खरीदा हुआ है, होल्ड करें या सेल करें, ये आपसे पूछना चाह रहे हैं। टाइम फ्रेम इन्होंने बताया नहीं है कि क्या इनकी ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है, पर एलगी इक्विपमेंट 548 की खरीद। देखिए 548 पे आपका बाइंग है, ऑलरेडी 486 के आसपास ऑलरेडी आप लॉस में हो, तो ऑलरेडी लॉस में हो तो अभी तो यहाँ पे मैं बेचने का सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि एक सपोर्ट है ऑलमोस्ट 454 के अराउंड। सो मैक्सिमम आप 450 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और बने रहिए इस काउंटर के साथ जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कार्तिक है हैदराबाद से, लिखते हैं, आई हैव अ क्वेश्चन ऑन टाटा केमिकल्स। आई हैव 100 शेयर्स ऑफ टाटा केमिकल्स एट 1115. कैन आई एवरेज एट द करंट लेवल्स? हाउ वुड यू लुक एट दिस स्टॉक? आई एम करंटली सिटिंग ऑन अ 16% लॉस। मुझे लगता है कि ओके,
डेफिनेटली आपको एवरेज कर लेना चाहिए। टाटा केमिकल फंडामेंटली बहुत ही अच्छा कंपनी है, अभी 933 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि आप बने रहिए एंड आप एवरेज भी करके जाइए, कुछ इशू नहीं है। जैसे ही स्टॉक 1000 के ऊपर सस्टेन करेगा, मुझे लगता है कि ये फिर से अपना ऑल टाइम हाई जो कि 1200 के ऊपर है जाने के लिए रेडी हो सकता है। सो डेफिनेटली आपको एवरेज करने का सलाह रहेगा। ठीक है। सुरेश हैं चेन्नई से लिखते हैं BEL इज ट्रेंडिंग, इज इट अ गुड स्टॉक टू होल्ड फ्रॉम अ शॉर्ट टर्म व्यू, व्हाट वुड यू एडवाइज? पिछले कुछ हफ्तों में हमने डिफेंस स्टॉक्स में एक बार वापस से मोमेंटम देखा, HAL BEL वापस से काफ़ी ट्रेंड में आए। इसको देखते हुए अभी आपको क्या लगता है, और शॉर्ट टर्म के लिए क्या इसमें अभी निवेश करना चाहिए? देखिए बीएल एक प्रॉमिसिंग स्टॉक है। यहाँ पे मुझे लगता है कि कुछ कुछ स्टॉक ऐसा होता है जहाँ पे आपको 1-2 हफ्ते के लिए ट्रेड नहीं किया जाता है, कुछ इन्वेस्टमेंट किया जाता है। तो बीएल स्टॉक डिफेंस में वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक है। आप देखेंगे मार्केट कैप भी ऑलमोस्ट 3 लाख करोड़ के आसपास है। आप जो पी रेशियो फंडामेंटली हम देखते हैं, प्राइस टू अर्निंग रेशियो बीएल का है ऑलमोस्ट 54-55 के अराउंड। इंडस्ट्री चल रहा है अभी 71 के आसपास, तो 71 इंडस्ट्री है एंड बीएल का अभी प्राइस ऑलमोस्ट 54 के आसपास पी चल रहा है। सो कहीं ना कहीं अभी भी अंडर वैल्यूएशन में है और नीट प्रॉफिट भी देखा जाए 5000 करोड़ के ऊपर है। सो और ऑर्डर बुक आप देखेंगे हर 15 दिन 20 दिन एक महीने में कुछ ना कुछ ऑर्डर आता ही है बीएल का। और टेक्निकली भी देखेंगे लास्ट टाइम का जो डिप था ऑलमोस्ट 370 से लेके 385 के आसपास एक बहुत बढ़िया सपोर्ट मेंटेन किया, अगेन 400 के ऊपर आया है। मुझे लगता है कि ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकता है। कभी भी अगर 400 के नीचे बाई चांस आ जाए, कभी भी 390 से 400 के आसपास बाय करने का सलाह रहेगा। करेंट जोन से भी आप बाय करके जाइए, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। शॉर्ट टर्म में 440 टारगेट होना चाहिए। अगर आपका व्यू 8 से 10-12 महीने का है, मुझे लगता है कि 550 भी पॉसिबल है। होल्ड करने का सलाह रहेगा जिनके पास है, और फ्रेश बाय भी आप करके जाइए। ओके, लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन देन। ये जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, अगेन वन ऑफ आवर व्यूअर्स फ्रॉम आवर व्हाट्सएप इज सेंडिंग अस दिस क्वेश्चन, जो कि है हमारे एक और व्यूअर का जो अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं खास तौर पर। एक न्यू क्वेश्चन है, तन्मय है अहमदाबाद से, BHEL के ऊपर सवाल है इनका। 1000 शेयर्स हैं, 128 पर खरीदा हुआ है। सेज आई नीड टू सेल दिस, कैन यू प्लीज सजेस्ट अ शॉर्ट टर्म व्यू? तो निकलना चाह रहे हैं BHEL में, 128 पर खरीदा है, क्या करें? कि मुझे लगता है कि आपको अभी एग्जिट नहीं करना चाहिए, क्योंकि 215 के आसपास का एक सपोर्ट लिया था एंड अभी ऊपर आ रहा है। अभी आप एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 230 के अराउंड। सो 230 विल बी और स्टॉप लॉस बने रहिए। एक बार 1-1.5 महीना भी अगर आप वेट करके जाते हो तो 275-280 ऑन द वे होल्ड करने का सलाह रहेगा करेंट जोन से। ओके, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हमारे पास ये जो क्वेश्चन आया है ये भी ले लेते हैं। और हमारे जो दर्शक हैं लगातार सवाल भेज रहे हैं। सौरभ हैं, लिखते हैं कि सर ट्रांस रेल लाइटिंग को लेकर आपकी क्या व्यू है? 799 पर मैंने लिया है, कैन आई एवरेज इन दिस शेयर? व्हाट वुड यू से? मैं वही बोल रहा था कि अभी मोमेंटम चेस करने जैसा स्टॉक नहीं ढूंढना चाहिए। अभी ऐसा स्टॉक ढूंढना चाहिए जो कि आपको अच्छा खासा बाउंस बैक देने के लिए रेडी हो। ऑलरेडी करेक्शंस हो चुका है, तो ट्रांसलेट लाइटिंग ऐसा स्टॉक है, ऑलरेडी ऊपर से करेक्शंस हो चुका है। 735 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि नीचे जाने का इसमें पोटेंशियल ज़्यादा इसमें है नहीं, अभी तो ऊपर आने का ही ज़्यादा लग रहा है प्रोबेबिलिटी। 770 एक रेंज है, अगर इसके ऊपर एक बार सस्टेन हो जाता है फिर से आपको स्टॉक 800 एंड ऑल टाइम हाई जाने को दिख सकता है। होल्ड करने का सलाह रहेगा। ठीक है। Let me take another question that we are getting again from our viewers who are coming in on our WhatsApp as well. A lot of people are joining in afresh and writing in their questions. We have Satyan writing on Inox Wind. इस शेयर को लेकर आपका क्या व्यू है? अगले 1 से 1.5 साल के बीच में Inox Wind को लेकर क्या सवाल है, क्या आपकी राय है? देखिए कहीं ना कहीं एक यहाँ पे सपोर्ट है, और डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, इसी स्टॉक पे ऑलरेडी हमने एक कॉल दिया है रिसेंटली। हमारे जो क्लाइंट है उन लोगों को भी, हमारे पास नहीं है, नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। आप एक स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। 120 होना चाहिए आपका स्टॉप लॉस, होल्ड करने का सलाह रहेगा। जैसे ही स्टॉक 145 का लेवल ब्रेक करेगा, उस टाइम पे आपको एक बार 175 से 180 तक आते हुए दिखाई देंगे। जी ठीक है। नितिन है, पूछना चाहते हैं आपसे पैसालो के बारे में। 2000 स्टॉक्स हैं इनके पास 39 के लेवल्स पर। इस शेयर को लेकर आपका क्या फ्यूचर आउटलुक है और कैसे इसमें आगे बढ़ेंगे? देखिए पैसालो में हमने कॉल दिया था 32-33 से, और इस पे इनफैक्ट 44-45 का हाई लगा के अभी 37, मतलब एक हेल्दी करेक्शन जोन पे आया है। कहीं ना कहीं ये करेक्शंस कंटिन्यू होता हुआ मैं दिख रहा हूँ। एक बार मुझे लगता है कि 34-33 ऑन द वे। एक बार वो जो साइकिल है, साइकिल कंप्लीट करने के बाद फिर से 45 के ऊपर आएगा। लेकिन आपने अगर बाय किया है तो स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस भी आपको मेंटेन करना चाहिए। 32.50 विल बी योर स्टॉप लॉस। करेंट जोन से मैं अभी इमीडिएट लेवल पे मोमेंटम नहीं देखता हूँ। जैसे ही भागेगा ये 44 के ऊपर भागेगा, अभी नहीं। तो 32.50 विल बी योर स्टॉप लॉस एंड बने रहिए।
ठीक है, ओके। चलिए 1249 तो हो गया है। आखिर में प्रदीप जी आपसे आपके पसंद के कुछ स्टॉक्स पता कर लेते हैं। पहला तो आपने डेंटा वाटर जो एक ब्रेकआउट स्टॉक है वो आपने सबको बताया ही आज के इस शो पर। और कौन से शेयर्स के ऊपर आप राय देना चाहते हैं? जैसे 25,016 अभी बाजार में चल रहा है तो मोमेंटम बढ़ रहा है पॉजिटिव साइड की तरफ। क्या कुछ नए स्टॉक्स आपने आइडेंटिफाई किए हैं हमारे दर्शकों के लिए? देखिए, एक स्टॉक है, कंपनी का नाम है सीपी प्लस आदित्य इंफोटेक लिमिटेड। और डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, हमने क्लाइंटों को भी कॉल दिया है। मुझे यहाँ पे एक टेक्निकली बाउंस बैक दिखाई दे रहा है और मुझे लगता है कि ये बाउंस बैक आपको एक बार 1480 एंड 1500 के ऊपर बहुत जल्दी आपको देखने को मिल सकता है। 52 वीक हाई, न्यू लाइफ टाइम हाई, नीला खुला आसमान में जाने के लिए रेडी हो रहा है ऑलमोस्ट। मुझे लगता है कि करेंट जोन से बाय करना चाहिए। मिनिमम 2 से 3 हफ्ते का एक व्यू रहेगा, एक स्टॉप लॉस रहेगा 1345 में। और मुझे लगता है कि ये 1500 क्रॉस करने के लिए रेडी हो रहा है जी। ठीक है, सीपी प्लस यानी कि इसको हम आदित्य इंफोटेक के नाम से भी जानते हैं। एनएससी पे आपको सीपी प्लस के नाम से मिलेगा। करंटली 1390 2.5% ऊपर है। 1500 के ऊपर के टारगेट्स के लिए आप इस शेयर में निवेश कर सकते हैं। अगले कुछ हफ्तों में आपको बढ़िया रिटर्न दिला सकता है। 1340 का स्टॉप लॉस भी आप लगाकर आगे चल सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी। सभी दर्शकों के आपने क्वेश्चंस जो एड्रेस किए उसके लिए भी साथ साथ अपने स्टॉक्स भी बताइए। आखिर में आप अपना कोई डिस्क्लेमर देना चाहते हैं? हाँ, देखिए, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। जितने भी स्टॉक्स को लेके मैंने बात किया, कोई भी स्टॉक्स में हमारा कोई भी पोजीशन नहीं है। नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। हो सकता है कि कुछ क्लाइंटों के पास पोजीशन हो, हमारे पास नहीं है। आप जब भी इन्वेस्ट कर रहे हो, हमारे राय से काइंडली, इसमें रिस्क बहुत है फाइनेंशियल मार्केट में, तो काइंडली आपका जो पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर है उनसे सलाह लेके कीजिए, या तो खुद भी आप एक बार स्टडी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच आपको एंड सारे व्यूअर्स को जी। थैंक यू सो मच प्रदीप जी। ऐसे ही उम्मीद करते हैं कि आप हर हफ्ते आते रहेंगे, अपने सभी दर्शकों के साथ लगातार जुड़ते रहेंगे, उनके क्वेश्चंस भी एड्रेस करते रहेंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस एज ऑलवेज एंड फॉर गाइडिंग ऑल आवर व्यूअर्स। अ लॉट ऑफ देम फॉलो यू वेरी क्लोजली एंड आर बिग फैंस ऑफ योर्स। सो थैंक यू सो मच। कुडोज टू यू फॉर योर रिसर्च दैट एवरीबडी बिलीव्स इन। थैंक यू so much for your time. All right, viewers, 25,025 is where we are at when it comes to the Nifty. 0.5% higher, days high, volumes are strong. Let's start another week. I mean, you know, it's a big bang and the bulls are coming back on the street as well after all that last few weeks of volatile moves. So let's hope that this sustains for the better, and the onus will be on the earnings. Starting Thursday, when we start to get all the earnings momentum, we'll have to see whether that can continue to keep the momentum on for the markets as well. Stay tuned with us. Of course, I'll be joining you for the closing edition at 3 p.m. So don't miss out on that one. We will be wrapping up the day's market and of course talking about all the stocks that moved and helping you prepare for the next day as well. So stay tuned for that at 3 p.m. I'll be seeing you soon.